Assalamu alaikum everybody, this is Awais Khalid, and today I have come up with this video for especially tributed to uh, the the Kashmiri brethren living in illegally Indian occupied Kashmir. Just yesterday, as of the date of 4th of August 2020, Pakistani cabinet has announced that the political diaspora of or the map of our uh, uh, political regime is going to be a certain way which it wasn't previously, और उस मैप को अप्रूव करने के लिए अपोजिशन की तमाम जमातों को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया। मगर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि कोई ऐसी एक्टिविटी की गई जिसके बाद डेफिनेटली इंडिया की तरफ से रिस्पांस अवेटेड है, और वो चूँकि इंडिया हमेशा से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की बहुत वावेला करता है और प्रोपेगेंडा भी करता रहता है, तो उस एतबार से अब ये देखना है कि इंडिया उस मैप के बारे में क्या कहता है। बहरहाल, मैं आज जो स्टोरी लेके आया हूँ वो बेसिकली मेरे दादा अबू की है, जो कि पार्टीशन से 10 साल पहले पाकिस्तान जो तब फोर्सेस थी और बाद में वो पाकिस्तान फोर्सेस बनी, तो उनके अकाउंटेबिलिटी के सेक्शन में काम करते थे, और उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया गया था जम्मू की स्टेट से वो आके डेफिनेटली सियालकोट में फिर पहुँचे। मैं और वाइस वर्सा माय नाना अबू also hails from Jammu and Kashmir, his forefathers basically, and they have lived in Sialkot for a while now. The concept of introducing a new political map is very important for the essence that the member of जो जिस तरह हमारी लोकल प्रोविंशियल असम्बलीज़ होती हैं और नेशनल असम्बली है, इसी तरह इंडिया में लेजिस्लेटिव एमएलए कहलाती है, लेजिस्लेटिव असम्बली जिसको लोकसभा भी कहते हैं, और उसमें करंटली जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसकी 2 सीट्स भी हैं। और अगर आप देखें कि लद्दाख जैसे इलाके में जहाँ पे चाइना जो सा अब आ चुका है, वहाँ से भी इंडिया ने इस इलीगली ऑक्यूपेशन के बावजूद अपनी एक लेजिस्लेटिव असम्बली के अंदर नॉमिनेशन की हुई है, और ख़ास तौर पे आर्टिकल 370 और 35A की एब्जुकेशन के बाद, मतलब उसकी ख़त्म करने के बाद सिग्निफिकेंटली इंडिया अब इसको एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे लेता है, लाइक एक प्रोविंस के तौर पे लेता है। पाकिस्तान ने जब मैप का लॉन्च किया तो इसका ये भी मतलब है कि कश्मीर के जो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं उससे किसी हद तक जो उनसे अब हम अपनी ही लॉजिक के अंदर फंस गए हैं, और हम भी अब उनका वो क्लेम नहीं मानते, और एक किस्म का ईंट का जवाब पत्थर से वाला सिनेरियो है। बहरहाल, politically people will understand it in the long run, because कौमें जो सी हैं वो तकदीर फिर ओवर अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम बदलती है। कश्मीर से रिलेटेड अगर मैंने थोड़ी सी स्टडी की है, हमें सबसे पहले बात यह है कि जो पाकिस्तान का मैप आज जारी किया गया है जिसमें जूनागढ़ भी दिखाया गया है, जूनागढ़ बाय द वे उधर के जो नवाब थे, he was a Muslim and the population was basically India Hindu based. मगर उन लोगों ने मतलब इंडिया ने शोर मचा दिया कि हम ना प्लेबिसाइट करेंगे और रेफरेंडम करेंगे, और उसकी बुनियाद के ऊपर हम जानना चाहेंगे कि कौन लोग, क्योंकि मेजॉरिटी उनको हिंदूज़ की लगी, मगर eventually the Junagadh person, the Nawab of Junagadh came to Karachi, acceded, जो उनके पास आप कह लें एक डॉक्यूमेंटेशन होती है टू जना कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। लाइकवाइज अब कहा यह जाता है कि जो जम्मू की रियासत है उसमें हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि इट्स नॉट ट्रू टू द फैक्ट, बिकॉज दे आर 40 to 60 इज स्टिल अ मेजॉरिटी इन डेमोक्रेसी। एक वोट भी ज़्यादा हो जाए तो दैट इज़ मेजॉरिटी। हाउएवर, इन कश्मीर अलोन there are 85 lakh Muslims who live in that piece of land. और कश्मीर, I'm talking about the valley of Srinagar, it goes up to बारामूला, और फिर अगर हम ऊपर वेस्टर्न लद्दाख की साइड पे जाते हैं तो देन देयर इज़
कारगिल जिधर टाइगर हिल भी थी, जिसको पाकिस्तान और मुशर्रफ ने काफ़ी डेज़ के लिए अंदर गए. सो इससे याद आता है वाक़या कि 2000 के दौरान जब ये एक्टिविटी हो रही थी तो then there was an NGO which I was very young to be a part of, but I saw their proceedings, how they accumulated money and handed over to the disband organizations like Lashkar-e-Taiba, which has now become Dawat Islam, Jamaat Dawa, and people were very eager to buy the Mujahiddin with these 2000 रुपये का एक जॉगर का. तब हमें बताया जाता था कि सियाचिन में जो उनसे ना मुजाहिदीन की हेल्प की जाएगी. सो पाकिस्तान वाज इनिशियली बैकिंग अप द मुजाहिदीन. Apparently they weren't Mujahideen as proclaimed by Musharraf, the then the person who was running all this campaign. और उसने later बताया भी था कि actually they were they call it regulars. So they were not even the borderline securities, they were the regular Pakistani army which was there. And that's why we have at least two Nishan-e-Haider that I can recall, Lalek sir or Colonel Jan Sher Khan. So both of these people got Nishan-e-Haider. The concept is because Quaid-e-Azam said कि Kashmir is the atut ang, as in the Indian narrative, is sharag of क्या कहते हैं, jugular vein of Pakistan. Kashmir is the jugular vein of Pakistan. And the concept is कि we have seen so many propagandas, we have seen Pakistani narrative, we have seen Indian narrative, मगर देखने में आता है कि there is a third party as well which says कि जी कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए. These are mostly people who had accumulated wealth. They were not satisfied with the Indian regime, the illegal occupation. They went away. They live in countries like America, and from there they want to promulgate कि जी पहले पाकिस्तान के साथ मिलके थोड़ा अपने आप को आज़ाद कराते हैं, उसके बाद अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. मुशर्रफ के दौर में ये सोचा जा रहा था कि जहाँ तक तब के फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कसूरी कहते थे कि कुछ देर हम आपको इंडिया को देंगे, कुछ देर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हैं पाकिस्तानियों को देंगे, कुछ देर लोकल्स को देंगे, और यूएन उसके ऊपर मतलब देखेगा. कश्मीर क्यों इम्पोर्टेंट है? कश्मीर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उधर भी मेरी तरह की आपकी तरह की यूथ होती है, और उस यूथ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो देयर आर टू काइंड ऑफ यूथ. वन इज़ what the seculars call here, like, or the liberalist, the people call कि जी वो मुजाहिदीन है ना, these मुजाहिदीन are basically state sponsored and they create terrorism. In return India sends spies and like कुलभूषण यादव, और वो पाकिस्तान के अंदर डिसरप्शन करता है बलूचिस्तान में, तो हमें इन्फिल्ट्रेट नहीं करना चाहिए, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल जो अपेरेंटली बनाई गई है उससे अब मुजाहिदीन को इन्फ्लक्स नहीं करना चाहिए. मगर ये उधर की लोकल यूथ है जो कि दीन के बहुत करीब है, और वो crux they are the real freedom fighters which are working sometimes at the behest of disbanded organizations like इसमें बहुत सारे का नाम लेके मैं उनकी तहरीक को ख़राब नहीं करना चाह रहा, मगर हकीकत यह है कि वो उधर का इनबिल्ट यूथ है या उधर के लोग हैं जिन्होंने 80 साल से 70 साल से ये जुल्म देखा हुआ है, और नाउ दे वांट कि जी अब हमसे वी कैन हैंडल इट नो मोर. ऑन द सेकेंडरी साइड देयर आर पीपल who are affiliated with India. They like to go into the universities, they go there, they get good education, and वो एक किस्म के ले पालक हो जाते हैं, Indian dependent हो जाते हैं. And these kind of the Muslim majority which does it, which is roughly I can say if there are people with Pakistan 15% of the total who want to solicit their opinions. Indians जो से हैं वो अगर 10% है, independent जो से हैं ना, then they are also existent, and then there is Pakistani quota. So जो लोग इंडिया के behest पे हैं, they are very inspired by the Bollywood. If you go and see their Twitter handles, they consider कि जी जो infiltrators हैं ना, these people are actually causing. एक ही घर के अंदर दो लोग भी ओपिनियन रखते हैं. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मिनिस्टर अगर देख लें, असद उमर, और उनके भाई हैं ज़ुबैर उमर. सो एक घर हाउस होल्ड के अंदर देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस, एंड
currently the people who are most secular from the youth of Kashmir, and they are lenient toward India because of the fact that they think that the infiltration has lost them the case of or the 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 reason of being equal in an overall India. And somehow ये एक बात उनकी जायज़ भी है क्योंकि they have been afflicted. On the contrary, Pakistan, when they launch ISPR songs, I have seen tweets, they're spread across timelines. They may be generated, they may be coming from the fake accounts, like कि जी वो जनरेट कर रहे हैं कि हमें आपके इन गानों की ज़रूरत नहीं है, हम उन गोलियों की बौछार सुनना चाहते हैं. मगर here is the the convoluted scenario, because Pakistani says they are also our brethren. We cannot do a forceful action, so it may hurt the populace living over there, which is the only reason stopping Pakistan from going into the illegally occupied Kashmir. They don't want the collateral damage to happen. और ये जो सी बात है, इसकी वजह से आज तक जो है ना हम वी हैव बिन वेटिंग फॉर द टाइम फॉर सो दैट an inbuilt and indigenous movement occurs, and the Kashmiri people are so far so much resilient that they will be eventually maneuvering themselves into independence. So we had been just watch and see wala scene kar rahe hain. Pakistan cannot, as it used to be in the past, can aid or finance such activities which India call as terrorism, which we call as our way of helping our brothers over there. I personally, in my childhood, had been found guilty, I would say guilty, of, without knowing the message, being contributing to Lashkar-e-Taiba. But here is again the crux. Now I have understood it. I am even more like, it may appease you or not, but I would rather actually support and financially such not the disbanded outfits, but people who actually want to cherish the benefits of freedom. I would love to enable them in one way or the other. In the past, I'd been launching Facebook campaigns just knowing that most of the advertisements are being ran by Indians who are at the behest, who are making decisions whether this advertisement should go forward or not. And you believe it, out of the 4 they had been denying 3, but somehow one or few advertisements got in the system, and I was personally able to send this messages like Amnesty International into the Indian populace, making them know that the crimes that they are committing are heinous. Long story short, Pakistan, I have a strong affiliation with Kashmir because of the youth living there, which are the most resilient people. Even under the lockdown, they have come up. Even if you go to the TikToks, you will find ample amount of creativity, and this way of inspiring them by creating songs is justified for the fact, because we are telling them, yes, we are a moderate country which has a certain affiliation, religious background which matches theirs. We have a common ground, and then we are also a bit on the enlightened side, that we are trying to cope up with the so-called craze of Bollywood, which inspires this kind of youth. Because when you find out the well-wishers who live in India, maybe the Jammu people, who are the cool people out of this Jammu and Kashmir, the Hindu pundits, they have been like, वो कहते हैं, I will be using this word, रंडी रोना, कि जी हमारे जो से ना हमारे पंडित्स को मार के जी निकाल दिया गया और डेमोग्राफिक्स चेंज की गई. सो ऐसी बात नहीं है. 40-60 इज द रेशो. डेमोक्रेसी में 1 वोट की मेजॉरिटी विंस. And now the people who came up had friendships with these people.
also meaning that Pakistanis, the Muslim people treat all human beings equal, had gotten so closer ties with their native neighbor, their surrounding neighbors. And this is one of the reasons the inclination went from like being modest to such kind of activities which inclined away from the religion itself and more into the secularism part. Like उधर भी आज भी resentment है against opening शराब के bars. So this is happening in Kashmir. It's a convoluted society. From our perspective, we had been, even I come from a very mediocre school background, DPS Divisional Public School, जिसकी फीस भी बहुत कम होती थी. And there on the blackboard हमारे चौक से हमसे नक्शा बनवाया जाता था. मेरे बहुत सारे दोस्त जो इस पेज को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, वो भी इस बात के विटनेस में. और उन्होंने, हमारे कंपटीशन होता था कि कौन एक्यूरेट मैप बनाता है. तो हमेशा से पाकिस्तान का मैप वैसा ही है जैसे आज लॉन्च किया गया है. इसकी मोर पॉलिटिकल क्या कहते हैं, एक उसमें एम्फेसिस आ चुका है. मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप गूगल को देखें तो इट्स मोस्टली बीइंग गवर्न्ड बाय Indian technical people, and we are at loss of people like Tania Idrus, who had left all her dubious and terrific job at Google. We want well-wishers in such big corporations as well. So what was happening is कि जो Google है ना, उसके अंदर हमारे जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर है पाकिस्तान के, कोई भी कंपेन आती है तो पाकिस्तान का जो नक्शा उठाते थे, तो देयर वाज अ वेरी पुअर poorly resonating images or graphics, vector images, which were being fabricated by India to just in order to squeeze the land area of Pakistan geographically, और वो ही लोग उठा के लगा देते हैं. This campaign I particularly launched against so many brands, and out of the very many, Daraz was one of it, and they retreated from their poor choice of map, and this was also being done deliberately in Pakistan. मैप के ऊपर चेंजेस तब तक नहीं आ सकती जब तक आपकी थिंकिंग और आइडियोलॉजी में चेंजेस नहीं आती. कश्मीरी यूथ अगर इंडिपेंडेंट होना चाहता भी है तो उनकी पहली ख्वाहिश ये है कि हम पाकिस्तान के ज़रिए हो जाएं, बाद में जो उनसे हम अपनी इंडिपेंडेंट को स्टेट बना लें. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की मदद के बगैर वो इंडिपेंडेंट हो जाएं. पाकिस्तान भी उनको ये लारा लगा रहा है कि हम जो उनसे ना आपको आज़ादी करवा के देंगे. on the very contrary, Pakistan is the lawful owner of that land. If we hold all the rules equal, even ये अम्बाला वाली साइड है, this was फिरोजपुर was ours, मगर जलंधर तक का part जिनसे. But what happened was a forceful annexation which India did based on the forceful occupation they did using their armed forces. Pakistan wasn't able to retaliate. However, they showed the result. Qaid-e-Azam sent the first batch of Pakistani army, and we have a particular area now. We call it Azad Kashmir, which is particularly demarcated in order for us to remind ourselves that this should be part of the complete picture, and it should annex with the main Indian occupied Jammu and Kashmir, and Ladakh is one of its part. Pakistan also did this strategy to gift away a few land in Ladakh to Kashmir in order for us to take this leverage that China is also on our side, and by gifting it to a stronger party, we ensured our autonomy, our willingness and mindfulness that yes, we were the rightful owner, and then we gifted it to China. So this was also a gimmick or maybe a strategy conducted by our politicians and our intelligentsia. Without further ado, Kashmir is an integral part of Pakistan, not Zubani Jama Kharch se, but we have not particularly seen, at least in our youth,
मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा ये इस तरह की बात सुनी है, कश्मीर की आज़ादी तक जो है ना उधार बंद है, कश्मीर की आज़ादी तक ये फ़लानी चीज़ बंद है, ये these norm cliches were being used in order to tell that this particular issue is still yet to be resolved, is still unresolved. Kashmir is again an integral part. मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, मगर the ownership, the onus of responsibility for having such an ownership and not refuting to the secular media which is in here in Pakistan, because उनके मुताबिक तो बलूचिस्तान में भी जुल्म हो रहा है, जबकि I have been to 10 different districts through my company in Balochistan and it is the most peaceful area as long as there are no internal mischievous activities being conducted through terrorism conducted by India into Pakistan. Then it is the most, it's a heaven for tourism as well. It's going to be inshallah the next tourism hub for Pakistan. And पाकिस्तान की जब बात हो रही है, कश्मीरी जो यूथ है, लाइक अगर हम उसका अहाता करें तो ब्रैडफोर्ड के अंदर इस वक्त कितने, मंगला डैम से जो मीरपुरी है वो सारे उधर जाके बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तानी हैं. सो आज़ाद कश्मीर का पार्ट है मीरपुर, इनफैक्ट कैपिटल भी रह चुका है, इस वक्त तो मुजफ्फराबाद है. तो कॉन्सेप्ट ये है कि मीरपुर से सरदार अतीक थे जो कि हमारे आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. गिलगित बल्तिस्तान पे आते हैं. गिलगित बल्तिस्तान भी अगेन इस पूरे कश्मीर का जिसको इंडिया क्लेम करता है कि जी ये हमारा हिस्सा है, उधर गिलगित है और बल्तिस्तान बल्ती लोग रहते हैं. ये वो लोग हैं जिन्होंने, ये वो मर्द मुजाहिद हैं जिन्होंने जाके आगे पत्थर रखे. और इसमें मोस्टली जो सा गिलगित में या हुंजा वैली में मोस्टली हमारे अहले तशी बरदरान रहते हैं जिनका इस्माइली फ़िक्र से ताल्लुक़ है, और वो लोग अपनी धरती के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं. और पाकिस्तान ने अब इसको उर्दू में जो उसकी एयरबेस है उसमें ये रिज़ॉल्व भी किया हुआ है, क्योंकि हमारा सी पैक का जो मेन कॉरिडोर है वो उस रूट से आ रहा है, गिलगित से आ रहा है, और इंडिया को वो भाता नहीं है. तो पिछले साल इंडिया ने एक फ़ेक ड्रामा रचा था जिसमें उन्होंने दरख्तों के ऊपर एक वार किया था सो कॉल्ड, और हमारे 10 दरख्त और 1 करोड़. तो उसके एतबार से फिर गिलगित बल्तिस्तान को वो बेसिकली हमारे डिस्टर्ब करना चाहता है, और इसलिए इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने मिलके उधर से एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी हैं. ये इन्फॉर्मेशन सारी आउट देयर इन ऑनलाइन अवेलेबल है. मैं इसको इसलिए रिएटरेट कर रहा हूँ कि आज के दिन के एतबार से डिस्कशन लाजमी थी. हुकूमत ठीक कर रही है, गलत कर रही है, मगर हैविंग बीन टोल्ड इन द like 70% or 80% of the गरीब गुरबत स्टूडेंट्स which are out there, जो कि आज इस चीज़ का भी हिस्सा है, उनको इस बात का पता है कि हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि कश्मीर हमारा जो सा ना एक शाहरग है, और ये एक स्टेट की गैर ज़िम्मेदारी होती है अगर वो, और ऐसी फ़ौज जिसकी बुनियाद ही जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने पे है, और कश्मीर is the main crux of maintaining the Pakistan army with 1400 billion Pakistani rupees as its this year's fiscal year's budget. तो फिर लाजमी है कि हम इन तमाम तर खरबों को देखें. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूएन में तकरीर की, बेहतरीन तकरीर की, उसका हमें बहुत इंटरनेशनल फ़ायदा भी होना चाहिए था. आज के लोग जो इस बात पे तड़पते हैं कि जी बातों से कुछ नहीं होता, जिस तरह मैं अभी एक डिस्कशन वीडियो पे कर रहा हूँ, ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि अगर आप बैठे हैं ना डिस्करेज करने के लिए कश्मीर की पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट को, तो कोई ना कोई ऐसा मेरी तरह का ज़ोरेस खालिद भी होगा जो कि कश्मीर के हक़ में भी बात आवाज़ बुलंद करेगा. और मेरी आवाज़ कोई सुने ना सुने, 10,000 तो इसके पेज के फॉलोअर हैं. एक बात ज़रूर है कि मेरी बात सुने, ये चीज़ रजिस्टर होगी, ये किसी प्लेटफॉर्म पे पड़ी होगी, इस वक्त कोई सुने ना सुने, बाद में ये रेजोनेट करेगी जब इवेंचुअली
कभी ना कभी पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर बनेगा, उस वक्त बाद फिर लोग याद रखेंगे कि पीपल वर रिजेंटिंग अगेंस्ट इट कि जी हमसे पाकिस्तान तो संभाला नहीं जा रहा, बात हम कश्मीर की करते हैं, कराची में पानी आ रहा है, ये सारे मामलात हैं। मगर जब जो असल में ना मैप्स आर मेड विद द आइडियोलॉजी, नॉट बाय कोई जोग्राफिकल लकीरें खींचने से नहीं बनते। सो ये चीज़ को दोबारा से आप जहन में रखें कि आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है, और ये सिंपली एग्जांपल और मैसेज अगेंस्ट द सेकुलर मीडिया विच इज़ आउट देयर। इसमें शाहीर सियालवी भाई हैं, उनकी बहुत हम खिदमात को मानते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मेरे जैसे बंदे का ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने की ज़रूरत इसलिए है कि अगेन आई हेल फ्राम कश्मीर एंड आई हैव अ विलिंगनेस टू गो। देखिए पाकिस्तान के पास एक मरी है, कुछ नीलम वैली है, आपको पत्थर पत्थर बता देंगे जो लोग उधर जाते हैं कि ये टूरिज्म जो सा होता है। सो इट इज़ टाइम फॉर पाकिस्तानी यूथ विच इज़ अ मुस्लिम यूथ इन मेजॉरिटी, and we also love our Hindu brethren who live in Pakistan, to now discover illegally occupied Jammu and Kashmir by the Indian forces. One day it's going to be not, even if it's not going to be ours, it's not going to remain theirs. This is a cognitive discussion I wanted to pull up. Tony Ashai, I want to give out shout outs. He's been tagged as being an ISI guy who promotes the Pakistani narrative. देखें, the people who are afflicted will automatically find ways to vent out. एंड आई बिलीव कि ये बड़ा डिसलॉयल होगा पाकिस्तान के साथ। हम लोगों की टेक्स्ट बुक्स जो हमें पढ़ाई गई हैं, गलत पढ़ाई गई हैं, सही पढ़ाई गई हैं, कि हम ये आज का जो सेक्युलर मीडिया है और इनकी जो सी बदमाशियाँ हैं, और वो ये कहेंगे जी पाकिस्तान जो है ना पहले अपना संभाल लो तो फिर कश्मीर की बात करना। ऐसी बात नहीं हो सकती। आइडियोलॉजी को आप नहीं चेंज कर सकते। उसको आइडियोलॉजी को अपहेल्ड करते करते हमने बांग्लादेश भी गवाया। मगर दिस डजंट मीन कि किसी चीज़ की जो बुनियाद है वो तब्दील की जा सके। कश्मीर इज़ स्टिल एन अनरिजॉल्व्ड इशू। इट ऑट टू बी फाइनलाइज्ड बाय द विल ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला। इसको हदीस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो आखिर ज़मां में according to the hadith it's going to be like the people who had formulated a caliphate in Jerusalem are going to come to the Indo-Pak area, और वो एक फाइनल जहाद की कॉल होगी, और खुरासान से जो से ना पीपल विल कम अप। खुरासान इज़ यूजुअली द स्टेट्स ऑफ ये जो उज़्बेकिस्तान और ये सारी सेंट्रल एशिया व्हेन USSR डिज़ोल्व्ड इन सोवियत यूनियन डिज़ोल्व्ड इनटू रशिया, उस वक्त जो हमारी बनी थी स्टेट्स। सो इधर से जो उनसे लोग आगे ना जहाद करेंगे। इस वक्त टेंशन भी इंडिया को यही है कि इफ़ वी गिव कॉरिडोर टू अफगान तालिबान from the western borders, it's going to disrupt because people have the jazba of jihad. You cannot tag me by having said these things as a jihadist, but the crux of the religion is there. It's written. It's going to be like that. We have a firm belief as if देखें, एक होता है जिहाद बिल कलम, एक होता है आप ज़ुबान से करें, एक दिल में गर्दाने, एक हाथ से रोकें. सो वी एब्सोल्युटली सपोर्ट पीपल who are fighting for their freedom. Freedom is very essential part. With freedom there comes responsibility, because it entails responsibility. Responsibilities are of different types. For a state, sovereignty is very important. That's why 27 फरवरी को हमने इंडिया को जवाब दिया था वो बालाकोट के सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक का. देखें, बैंडेड आउटफिट्स का तो नहीं पता, मगर आप में से एक प्रॉमिस आखिर पे, मेरे पास एक लिस्ट है. उस लिस्ट के अंदर ना मैंने डिफरेंट सिटीज़ या आप कह लें टाउन्स को आइडेंटिफाई किया जो कि कश्मीर में हैं, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में. आप देखेंगे आप उसमें से कितने उनको टाउन्स को जानते हैं. मैं इस लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ पुलवामा बीइंग वन ऑफ देम. देन देयर आर सो मैनी अदर प्लेसेस. Let's have a look at these
names, and let's find a camping bag and resolve to go next season, or maybe that's like an overstatement, but in future inshallah ta'ala the border should be open by any means. The people have been put to a forceful lockdown. We strongly condemn as a Pakistani nation कि हमारे Muslim brethren के ऊपर ये जुल्म हो रहा है. This is totally unacceptable. And then the most important part of all is that they should be given a right to choose their future, choose their present, and live a very willingful and happy life. And जिन लोगों को जिन्हें लेट ज्वाइन किया है वो इस बात को ज़रूर इस बात का यादा करें कि 14th August को is going to be a simpler one given the corona is out there. अपनी एहतियात करनी है, आपने ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, अगर आपने शोर शराबा हल्ला गुल्ला करना भी है. These things add to the beauty of nations. People say कि जी इससे क्या मिलता है ना. So one should go and witness their freedom. Let's pray that our Kashmiri brethren in the illegally occupied state of Kashmir also get this chance to celebrate and commemorate their freedom with Pakistan. Thank you and Allah Hafiz. Do comment if you like anything. If you don't like anything, just ignore. Or if you really love it, then share please. Thank you.